A very good morning to all of you. I hope you all are doing well. So, basically, today we are going to start our new chapter of your political science book, Political Theory, chapter number 5, Rights. Okay. So, basically, what are rights? First of all, before starting the chapter, I would like to ask you what do you mean by rights? So, basically, rights are the primarily those claims that I, along with others, regard to be necessary for leading a life of respect and dignity. This is the lamest, you can say the lamest definition of the rights. Okay? Rights are basically the claims that we, along with others, and we think it is necessary for our life, for leading our life with respect and dignity. ठीक है, ऐसे राइट्स, ऐसे अधिकार या ऐसे क्लेम्स जो हम रखते हैं सोसाइटी के सामने कि ये हमारी लाइफ में हमें आगे बढ़ने के लिए, हमारी लाइफ को लीड करने के लिए ज़रूरी है, ठीक है? जिससे कि हमें सोसाइटी में रिस्पेक्ट भी मिले, डिग्निटी भी मिले, हम डिग्निटी के साथ रह सकें, तो दोज़ आर नोन एज़ राइट्स, ओके? ऐसा नहीं है कि कोई भी कुछ भी आके आपको कह रहा है या आपको बोल दिया कि नहीं आप यहाँ पे घर नहीं बना सकते हो, या आपको बोल दिया कि आप खाना नहीं खा सकते हो, या ऐसे छोटी-छोटी चीज़ें, ठीक है? ये सब क्या है, अगर आपको ऐसा कोई बोल दे कि नहीं आपको खाना अभी खाना नहीं खाना है, मैं जब बोलूँगा तभी आपको खाना खाना है, तो दिस इज़ नॉट राइट ना, इट इज़ नॉट गिविंग यू द लाइफ ऑफ डिग्निटी, लाइफ ऑफ रिस्पेक्ट, राइट? So rights are basically the claims that is necessary for leading a life with dignity and respect. Okay. For example, before moving, oh wait. Rights are the fundamental normative rules about what is allowed of people or owed to people according to some legal systems, social conventions or ethical theory. ठीक है, फंडामेंटल नॉर्मेटिव्स, ठीक है, फंडामेंटल इज बेसिक नॉर्म्स, बेसिक नॉर्मेटिव रूल्स होते हैं, बेसिक नॉर्म्स होते हैं, बेसिक रूल्स होते हैं जो लोगों को अलाउ किया जाता है या फिर लोग उसे ओन करते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सम लीगल सिस्टम, सोशल कन्वेंशन और एथिकल थ्योरी। ऐसा नहीं है कि जो लोगों ने बोला या किसी भी पर्सन ने बोल दिया मुझे ये राइट चाहिए वो राइट मिल गया, नो, इट इज बेसिकली अकॉर्डिंग टू द सम लीगल सिस्टम, सोशल कन्वेंशन और एथिकल थ्योरी. These are the normative rules according to the which is owned by the people according to some legal system, social conventions or ethical theory. So in our everyday life we often talk about our lives, as you all know, India is a democratic country, so we all may speak of rights, rights like right to vote, right to form political parties, right to contest elections, and etc. etc. But apart from generally accepted political and civil rights, the whatever rights I have talked about is all are the political and the civil rights. Okay, people today are also making new demands for rights such as the right to information, right to clean air, or right to safe drinking water. These are also the basic rights we all demanding because we are living in the society. If we do not get whatever product we are purchasing, okay, and if we have no right to gather the information about that product, so जो भी शॉपकीपर है, रिटेलर है, आपको कुछ भी बोल सकते हो कि सेल कर देगा, एंड आपके पास अगर राइट ही नहीं है इंफॉर्मेशन की, राइट टू इंफॉर्मेशन की, तो आप वो उससे पूछ नहीं सकते हो, बट यू हैव द राइट टू इंफॉर्मेशन। तो सामने वाला जो भी बंदा है, जो भी पर्सन है, उसको उसके बारे में बताना ही पड़ेगा बिकॉज यू हैव द राइट टू इंफॉर्मेशन। और अगर वो नहीं बताएगा तो
सम लीगल एक्शंस उसके खिलाफ हो सकते हैं. ओके, राइट टू क्लीन एयर. ठीक है, वी आर लिविंग इन द सोसाइटी, सो वी हैव द राइट to we have the right to live in the clean environment. Okay, we have the right to safe drinking water. Okay, so these are some of the rights which we are also demanding and we want in our life. Rights are claimed not only in relation to our political and public lives, but also in relation to our social and public relationships. ठीक है, it is not only claimed in relation to the political or personal lives. Okay, सॉरी पब्लिक लाइफ्स की. ठीक है, पॉलिटिकल राइट्स, राइट टू वोट होना चाहिए, राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन होना चाहिए, या पब्लिक इंटरेस्ट में कि हमें सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिलना चाहिए, हमें पब्लिक प्लेसेस में जाने का राइट होना चाहिए, उनके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करने का राइट होना चाहिए. बट हमारा सोशल और पर्सनल रिलेशनशिप है, उनसे भी, उनके अकॉर्डिंग भी हम क्या कर सकते हैं, उनके लिए भी हम अपने राइट्स को क्लेम कर सकते हैं. राइट्स में बी क्लेम्ड नॉट ओनली फॉर ह्यूमन बींग्स. ठीक है, एडल्ट ह्यूमन बींग्स, एज ए एडल्ट ह्यूमन बींग खाली आप राइट्स को क्लेम नहीं कर सकते हो, बट इट कैन ऑल्सो बी claimed by children, unborn fetuses and even animals. Okay, अब आप देखते हो कि unborn fetuses हो गए या children हो गए, even animals हो गए. हम बहुत से ऐसी organizations हैं जो इनके एनिमल राइट्स के लिए या फिर चिल्ड्रन राइट्स के लिए, फिटस, अनबॉर्न फिटसेस के लिए बहुत सारे लोग इन पे वर्क करते हैं. ठीक है, कि some people are thinking like animals are like our own property, so we may deal with them the what in whatever sense they want to. No, they also have some rights, right? So the notion of rights is thus invoked in a variety of different ways to different people. So ये जो नजरिया है, या फिर आप बोल सकते हो कि जो राइट्स का आप डेफिनेशन बोलोगे, कुछ लोग अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कॉन्सेप्ट है, बिलीफ है, आइडिया है. जो आइडिया है राइट्स का, सबके लिए डिफरेंशिएट करता है, डिफरेंट पीपल के लिए डिफर करता है. सो आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर, व्हाट वी आर बेसिकली going to learn and what we are going to explore in this chapter, after reading this chapter we will able to understand when we mean when we speak of rights, what do we mean. ठीक है, जब हम rights के बारे में बोलते हैं तो बात करते हैं तो लिटरली हम क्या मीन करते हैं, ऐसे. ठीक है, आफ्टर दैट व्हाट इज द बेसिस ऑन विच राइट्स आर क्लेम्ड, ऐसे कौन से बेसिस हैं जिसपे हम राइट्स को क्लेम कर सकते हैं. हम कुछ भी बोल दिए कि ठीक है, हाँ, अभी हम एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे कि हम स्कूल आ रहे हैं, हम मैम हमें जो स्कूल यूनिफॉर्म पहन, हमें स्कूल यूनिफॉर्म नहीं पहननी, हम जो ड्रेसेस पहनना चाहते हैं हम वो पहन के आएंगे. तो दिस इज नॉट द राइट क्लेम, राइट. सो देयर आर सम बेसिस जिसपे राइट्स को क्लेम किया जाता है, तो हम उसके बारे में समझेंगे. एंड व्हाट पर्पस डू राइट्स सर्व एंड व्हाई आर दे सो इम्पोर्टेंट. राइट्स क्या पर्पस सर्व करते हैं और हमारी लाइफ में, ह्यूमन बींग्स की लाइफ में, एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी के मेंबर होने के एज अ मेंबर ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्री, हमें हमारे लिए राइट्स क्यों इम्पोर्टेंट है, ये सब के बारे में हम समझेंगे और एक्सप्लोर करेंगे इस चैप्टर में. ओके, सो व्हाट आर राइट्स. A right is essentially an entitlement or a justified claim. ठीक है, एक essential entitlement है या फिर एक justified claim है. And entitlement का मतलब यहाँ पे क्या है, a right should be entitled to as citizens, as an individuals and as human beings. ठीक है, कि कौन से rights किसके लिए, जो citizens के लिए, individuals के लिए, human beings के लिए जो rights entitle किए गए हैं, बताए गए हैं,
ठीक है, और वो कौन से राइट्स को क्लेम कर सकते हैं, क्या अधिकार वो सोसाइटी में क्लेम कर सकते हैं, दैट इज बेसिकली नोन एज राइट्स. It is something that we consider to be due to us, something that the rest of society must recognize as being a legitimate claim that must be upheld. Okay, right is something which we consider to be due to us. ठीक है, it is something that the rest of society, ऐसा नहीं है कोई भी right है उसको, जितनी भी जो भी सोसाइटी है, जितने भी लोग सोसाइटी में रहते हैं, वो भी क्या उसे एक्सेप्ट करें. Okay, so right, according to the and it should be legitimate claim. Legitimate claim, legitimate का मीनिंग आप इन सिंपल सेंस समझ सकते हो, लीगल. ठीक है, लीगल क्लेम होना चाहिए जो गवर्नमेंट ने, जो सोसाइटी ने रिकॉग्नाइज कर रखा है, जो सोसाइटी ने बता रखा है. ठीक है, लीगली बता रखा है कि यू कैन क्लेम दैट राइट. दिस तो इट इज समथिंग that the rest of society must recognize as being a legitimate claim that must be upheld. Okay, so rights are primarily those claims that I along with others regard to be necessary for leading a life of respect and dignity. ठीक है, it is basically, it is primarily those claims that we regarded to be necessary for leading a life of respect and dignity. ठीक है, एक रिस्पेक्ट के साथ और एक डिग्निटी के साथ लाइफ में रहना. ठीक है, लाइफ को लीड करना. ठीक है, उसमें हेल्प करते हैं राइट्स. फॉर एग्जाम्पल, first example is right to livelihood. You all have the right to livelihood. Okay, the right to livelihood may be considered necessary for leading a life of dignity. ठीक है, राइट टू लाइवलीहुड का होना बहुत जरूरी है अगर हमें एक लाइफ, हमें डिग्निटी के साथ, इज्जत के साथ सोसाइटी में रहना है, अपनी लाइफ को लीड करना है. तो being gainfully employed gives a person economic independence and thus is central for his her dignity. ठीक है, एक एम्प्लॉयमेंट, अगर आप एम्प्लॉयड हो तो एक पर्सन को वो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस देता है, और इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस जब पर्सन के पास होती है तो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है. ठीक है, उसके अंदर डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट होती है. तो राइट टू लाइवलीहुड, आप अपने अकॉर्डिंग जीवन को चलाना चाहते हो, लिव करना चाहते हो, और एक पर्टिकुलर प्रोफेशन में जाना चाहते हो जिससे कि आपको इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस मिले, और आप सेंट्रली या फिर इन सोसाइटी आपके आपके सामने क्या हो, आप डिग्निटी के साथ रह सको. तो ये इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस भी आपको क्या है, डिग्निटी डिग्निटी रखने में हेल्प करता है. So once our basic needs met, give us freedom to pursue our talents and interests. और जैसे ही अब इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस आए तो हमारे बेसिक जो नीड्स हैं, बेसिक नीड्स लाइक फूड, शेल्टर, फूड, क्लोथ एंड शेल्टर, दीज आर आवर बेसिक नीड्स, एजुकेशन एक्सेट्रा. आज के टाइम पे बेसिक नीड्स बहुत बढ़ गया है, बट इन कॉमन सेंस वी कंसिडर बेसिक राइट्स एज फूड, क्लोथ एंड शेल्टर. सो जैसे ही हमारे बेसिक नीड्स मेट होते हैं, वी हैव द फ्रीडम टू परस्यू आवर टैलेंट्स एंड इंटरेस्ट. हमारे पास फ्रीडम है कि हम अपने टैलेंट्स को, इंटरेस्ट को परस्यू कर सकें. ओके, आई एम गिविंग एन लिटिल एग्जांपल. फॉर एग्जांपल, आप एक फैमिली में हैं. ठीक है, आपकी फैमिली ने आपके बेसिक नीड्स को क्या कर दिया, फुलफिल कर दिया. फूड, क्लोथ एंड शेल्टर, दीज आर द बेसिक नीड्स. ओके, आफ्टर दैट दे हैव देयर इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, you have the right to livelihood. So your father, your parents think I should send my child in a school. After going to the school, he or she can explore their talents. Okay, explore their interests. He or she get the right education, etc. Okay, so basic needs जब हमारी met होती है, उसके बाद हमारे पास right to livelihood का मीनिंग यही है कि हमारे पास freedom होता है कि हम अपने talents को, अपने interest को आगे pursue कर पाए. Okay, this is the one example. And second example is the right to expression. ठीक है, right to express ourselves freely, and this right gives us the opportunity to be creative and original, whether it be in writing or dance or music or any other
extracurricular, or you can say any other activity. Okay, right to expression is one of the most important right given in our country. ठीक है, because of this right to expression we can freely express ourselves. Okay, we have the freedom, we have the opportunity to be creative. Okay, by being creative in the form of dance and by singing, by music, by writing, we can express ourselves, we can give our ideas to the societies. Okay, so right to expression is also very like for example, there are expressions are also there are lots of emotions and expressions we a human being have. Okay, so like if you are angry, if you are happy, if you are sad, you can express them. Okay, due to this right to expression, अगर suppose right to expression आपके पास नहीं है, ठीक है, एंड यू फील सो एंग्री, और आपके सोसाइटी में बस आपको खाली खुश रहने का ही अधिकार है, ठीक है, यू कांट एक्सप्रेस योर एंगरनेस। ठीक है, आप क्या सोचोगे, आप बोलोगे अगर मैंने अपना गुस्सा दिखा दिया तो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी हम मुझे। ठीक है, सो राइट टू एक्सप्रेशन इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट राइट, so we can express ourselves in many other forms, by painting, by dancing, by music, by writing, and thereby um, there are so many like by orating, by giving speech, etc., where there are so many ways to be creative and to be in our original form to express our beings. So freedom of expression is also important for democratic government, since it allows for the free expression of beliefs and opinions. ठीक है, so for a democratic government, for a democratic country, freedom of expression is one of the important right given to the people. Why? Because it allows for the free expression. ठीक है, whatever the ideas and beliefs people have, the whatever the opinions people have, they can freely express them and in any form. So these are some of the rights. ठीक है, other than civil rights and other than political rights, these are the civil rights and which give us the confidence to live a life of dignity. Okay, so rights are necessary for our well-being. हमारे लिए rights बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. It is mandatory for our well-being. They help individuals to develop their talents and skills. ठीक है, rights helps us. Rights helps individuals to develop their talents and skills. Talents और skills को भी right जो है क्या करता है, डेवलप करने में हेल्प करता है. फॉर एग्जाम्पल द राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन है हमारे सामने. तो राइट टू एजुकेशन हमें क्या क्या बताता है, इट किस चीज में हेल्प करता है. इट हेल्प्स टू डेवलप आवर कैपेसिटी टू रीजन. ठीक है, डेवलप कि ठीक है कुछ भी सोसाइटी में हो रहा है, इफ वी हैव द अप्रोप्रिएट एजुकेशन, वी हैव द क्वालिटेटिव एजुकेशन एंड वी हैव द राइट टू एजुकेशन, तो वी कैन गिव द रीजन. ठीक है, वी कैन आस्क फॉर द रीजन, और या फिर हमारी जो कैपेसिटी है कि ठीक है हम क्यों पढ़ रहे हैं, हम क्यों रह रहे हैं, हम जो भी काम कर रहे हैं हम क्यों कर रहे हैं, हमारे पास रीजन देने के लिए हमारी जो कैपेसिटी बिल्डिंग है वो क्या करती है, डेवलप करती है राइट टू एजुकेशन. इट गिव्स अस यूजफुल स्किल्स. देयर आर so ample amount of skills which we get by getting the right to by getting the qualitative education under right to education. There are you all are like so talented in many different ways. Okay, someone is very good in writing, someone is very good in orating, someone is very good in dancing, someone is very good in like theoretical portion, someone is very good in science, someone is very good in, there are so many things. Okay, you all have certain skills in yourselves, and right to education helps you to आप क्या कह सकते हो कि वो आपके अंदर से स्किल्स निकालने में, ठीक है, अपने स्किल्स को डेवलप करने में, फाइंड आउट करने में क्या करता है,
हेल्प करता है. इट इनेबल अस टू मेक इन्फॉर्म्ड चॉइसेस इन लाइफ. whatever choices we put in our life, we take in our life, so it helps to make the informed choices or the right choices in life. कि हम अपनी लाइफ में एक केयरफुल चॉइस करें या फिर एक इन्फॉर्म्ड चॉइसेस अपनी लाइफ में लें, तो राइट टू एजुकेशन उसमें हेल्प करता है. सो दिस इज बेसिकली it is in this sense that education can be designated as universal rights because it gives society uh, a strength, a strong strength. That's why right to education is designated as, ठीक है, उसको क्या कहा गया है कि this is the universal rights. Everyone should have this right. Everyone should have the right to education because by getting the proper education, and if a person is having right to education, ठीक है, अगर मैं बात करूं आज से 300-400 साल पहले, in certain societies education for women is education for women or the so called lower class classes, ठीक है, is not mandatory. They doesn't, मतलब they didn't have the right to education. ठीक है, चाहे वो बंदा कितना ही टैलेंटेड हो, उसके अंदर कितनी ही अच्छे स्किल्स हो, they didn't have. जैसे आपने सुना होगा कि पहले एक बहुत ये एकलव्य और गुरु द्रोणाचार्य की स्टोरी आपने सुनी होगी. एकलव्य had the he had the talent in archery, but Guru Dronacharya said no, you do not have the right to get the education in archery. That is also a kind of education, right? Getting he had all the skills, but Guru Dronacharya ने बोला नहीं, आपको right नहीं है. So सर्टन सोसाइटीज में ऐसा बहुत कुछ हुआ है जहाँ पे समटाइम्स पीपल डोंट गेट देयर राइट टू एजुकेशन. उनको एजुकेशन मिलती ही नहीं थी. बट right to education is that kind of right which makes us strong and which helps us in many different ways. So that's why it is designated as a universal right. Okay, but there are certain rights, like however if an activity is injurious to our health and well-being, it cannot be claimed as a right. ठीक है, एक ऐसी एक्टिविटी जो हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिशियल नहीं है, ठीक है, हमारे लाइफ के लिए बेनिफिशियल नहीं है, बहुत ज़्यादा डेंजरस है, दैट कैनॉट बी क्लेम्ड एज राइट. ओके, फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल, सिंस मेडिकल रिसर्च हैज shown that prohibited drugs are injurious to one's health and since they affect our relation with others, we cannot insist that we have a right to inhale or inject drugs or smoke tobacco. Okay, so this example, ठीक है, मेडिकल रिसर्च ने देखा कि if ABC drugs or prohibited drugs, if we consume that prohibited drugs, it is very much injurious to our health and it affects our relationship so much. So हम किसी को इंसिस्ट नहीं कर सकते या फिर कोई ये नहीं बोलेगा इट इज माई लाइफ, इट इज माई राइट टू इनहेल एनी काइंड ऑफ ड्रग्स और स्मोक बिकॉज इट्स माई लाइफ. नो, ठीक है, दिस इज बेसिकली नॉट द राइट. ओके, you have you can't claim for this type of right कि it's my life, it's my choice, I can inject or inhale any kind of drugs or smoke. No, you cannot claim like this, right? Because it is injurious to our health as well as others health, and it also affects our relationship. So we cannot claim these kinds of rights. In the case of smoking, it may even be injurious to the health of people who may be around the smoker. And in case of smoking, as you all know,
ठीक है। अगर हम किसी जो स्मोक करता है अगर हम उनके पास में भी हैं तो इट इज ऑल्सो अफेक्ट आवर लाइफ। ठीक है, आपने बहुत एग्जाम्पल सुने होंगे कि हमने तो अपनी लाइफ में कभी कुछ ऐसा लाइक टबैको कंज्यूम ही नहीं किया, या फिर बट दे ऑल्सो गेट लाइक प्रॉब्लम्स लाइक कैंसर एंड मतलब लाइक बहुत से इल डिजीजेस हो जाते हैं। ठीक है, क्यों होते हैं? because of like some people they are around those people who are like who may be smoking or like taking certain kinds of drugs or tobaccos etc, that's why उनकी हेल्थ, उनके अगर सराउंडिंग्स में भी अगर कोई ऐसी चीजें कंज्यूम कर रहा है तो जो सराउंडिंग्स में जो और लोग हैं उनकी लाइफ भी क्या है उससे अफेक्ट हो सकती है। सो in terms of our definition of rights, smoking or taking banned drugs cannot be claimed as right। ठीक है, तो हम राइट्स की अगर बात करते हैं तो मैंने आपको बताया कि स्मोकिंग करना या फिर ऐसे प्रोहिबिटेड ड्रग्स जो बैन है उनको लेना, इनको हम एज अ क्लेम नहीं कर सकते। ओके, माई लाइफ माई चॉइस वाला रूल यहाँ पे नहीं चलेगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। ओके, अब मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी बताया कि आपकी स्कूल का आपको मैंने एग्जाम्पल बताया कि मैं अपनी चॉइस के क्लोथ्स पहनना चाहता हूँ स्कूल में या चाहती हूँ स्कूल में, तो स्कूल विल नॉट परमिट यू टू वियर वट एवर काइंड ऑफ ड्रेसेस यू वांट्स टू वियर, या फिर आपके घर में भी कुछ नॉर्म्स होते हैं। ठीक है, कि यू आर नॉट सपोज टू गो आउटसाइड आफ्टर 6 o'clock और 7 o'clock। ठीक है, एक सर्टन सबके घर में होता है ये, तो ऐसा नहीं होगा कि नहीं यू आर नॉट अलाउड, you do not have right, you're not of the appropriate age। ठीक है, एक ऐसी एज नहीं ली है, अगर ले भी ली है तो certain rights, we all have certain rights in our home also, in our society। ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसे नॉर्म्स होते हैं, राइट्स होते हैं। ठीक है, जिसको हम क्लेम नहीं कर सकते। सो राइट्स आर बेसिकली दोज which is accepted by our society। ठीक है, which should be ethical to live a life with dignity, and it should be legal। Okay, so this is all about today class. In our next class we will discuss about where do rights come from। Okay, thank you so much everybody for joining the class, for listening to me so patiently. Thank you so much. Now if you face any problem you can approach to me